another video और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं इसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग जूहू स्कीम विद सनी एंड राजवीर देओल, तेरी गली में कर्ली टेल्स। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो का चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोकेशन का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। दिन तो शुरुआत पराठे से ही होता है, तो पराठे अच्छे लगते हैं। बाकी जो भी हमारी सब्जी, दाल सब्जी हो। बॉलीवुड में कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि जो बॉक्स ऑफिस रूल करने के साथ साथ अपने फैंस के दिलों पर भी राज करते हैं। तो ऐसी एक फैमिली है जिनके साथ तारीख पे तारीख मिलने के बाद फाइनली एक तारीख मिल गई। On this episode of Tere Gully में we'll explore the gullies of the Deols with the father-son duo of Sunny Paji and Rajveer. Hello. It's so good to meet this father-son duo. All well. How are you? All good. How are you? All well. A good, nice morning to start with our sojourn today. How are you all doing, firstly? Doing great. Getting ready for my son's film. Oh yes, we have a lot to talk about his debut. We have a lot to talk about your journey and how he's taken inspiration from your journey. But along with that, we have a lot to eat as well. Follow us. Let's go. मुझे नहीं पता ही नहीं था, मैंने इसे बोली नहीं। प्रीतम दा ढाबा। वाओ नाइस। हम आए हैं प्रीतम दा ढाबा पे प्रॉपर पंजाबी खाना खाने। टेल मी क्या अच्छा लगता है पंजाबी खाने में? मतलब कुछ तो स्पेसिफिक होगा ना? दिन तो शुरुआत पराठे से ही होता है। Okay. तो पराठे अच्छे लगते हैं। बाकी जो भी हमारी सब्जी, दाल सब्जी हो। यहाँ क्या मंगा रहे? इनको बोल दिया पहले से, लेकर आ रहे हैं। हाँ। अच्छा। You step ahead of us. Okay. So I also know that you stayed in Punjab for a bit. यार मैं पंजाब Quite काफी सालों आ रहा हूँ। Till 1980 तक भी वहाँ हर साल 2-3-4 महीने रहा करता था पंजाब। पूरा बचपन काफी वहाँ था और काफी चीजें मैं वहाँ सीखा हूँ। I learned my swimming over there. वो कैसे? वहाँ नहर है, नहर से मैं पुल के ऊपर जाता था, छलांग मारता था, फ्लोट करता वहाँ पहुँच जाता था, तैरना सीख गया। Okay. Have you learned it the same way or in the You can ask me these questions after him. I won't have such a good answer. When you say you stayed in Punjab, are these in the cities of Punjab के proper खेत के बीच में घर है? गांव में रहते थे। मेरी मम्मी का विलेज था और बहुत वक्त वहाँ पे गुजारा है। और मुझे अभी भी याद है, मैं सुबह मामा हमारे थे, उनके साथ सुबह that time we used to have the bullock carts and all. Early morning 5:30 they would go to the fields and I would accompany them that time, and it was so small. So those memories are there where I remember the smell of the soil and early morning गुरुद्वारे से वो शुरू हो जाता था, सब उठ जाते थे गांव वाले. It was very beautiful. And then खेत में जाते थे तो obviously खूह था वहाँ पर फिर. I don't know. Those are beautiful memories. Growing up, Rajveer, what were vacations for you? How did holidays look like? What did you do in your vacation? We would just go far away from crowd. We just go to nature. Dad always preferred nature, and that's how I developed a love for just being around trees, mountains, and just far away from crowds. Even when you were going to England, you were always in the countryside. Yeah, just in the countryside. People always call England London, but I was like 5 hours away, somewhere small village in England. Both of y'all are in the same profession. He's had an illustrious career. You just starting out. Did he give you tips? ऐसे बैठ के ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे पेश आना चाहिए? Dad's a person will not give tips. He wants you to make your own mistakes. So he didn't have to give tips also. He just wants to throw you in the deep end sometimes and see if you can drown or swim. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना ज़्यादातर तो प्रोटेक्टिव रहते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना। I have a game for you.
this or that. Alternate questions, you have to pick from the two options, yeah? We start from you, Rajveer. Travel in luxury or backpack? I don't mind both. It's hard to say which one. Why backpack? Let's stick to luxury. I guess like Street food or gourmet food? जहाँ पे भी अच्छा खाना मिलता है स्वाद हो, street food भी अच्छा always mostly अच्छा ही होता है. Explore a new country every week or slow travel? explore a new country every week. That sounds like fun. Movies or OTT? I'm a movie guy. I'm a silver screen guy. The OTT is also nice, but that is when you have to see certain deep-rooted stuff which is goes on for a couple of hours. Then obviously it's the OTT, where you get to get the layering of different characters. Then you enjoy that. But big screen is where you are there, shut in a room for 3 hours or 2.5 hours, and then you come out. You say, so you get caught into it. So you cry, you laugh, you get excited. I think that is something which is so beautiful. Sweet or savory? Sweet. Yeah, I mean, I would say sweet. Reading a book or watching a movie? I'm not a reader at all, so watching a movie. Vada pav or pani puri? Vada pav. That's spoken like a true Mumbaiker, I feel. Directing or acting? Acting is the easiest thing. Beach vacation or a mountain retreat? Mountain. Solo traveling or traveling with family? That depends. To where you're going? Yeah, I mean, if I go into the mountains, obviously, hiking up over there, it will be mostly solo with your friends or somebody. But if you're going to a proper place somewhere, then obviously it's a family where we all can be together. Last one to you. Dating apps or no dating app? No dating app. I feel bad for people on dating app. I know a couple of people who got catfish. Are you serious? Yeah, so I just good luck out there, guys. So do you believe in like falling for someone the old-fashioned way? Are you like an old school person? If that means getting to know someone and then just, I don't know, if there's a chemistry, then I guess I'm old-fashioned. Okay, wow, that is old-fashioned. Okay, but it's then, yes. beautiful. You don't find many people like that today. So if some lassi coming our way. That I can have anytime, anywhere. I've also heard that you love driving and going on long drives. Yeah, I love driving. That is my favorite pastime. Unfortunately, in Bombay, now we can't do much. But for my shootings, I always keep them outdoor. And I take my cars along and I go for, like, even if I have to go to Rajasthan or Hyderabad or I have to go any place, or even up to Punjab, Manali and all, I usually love to drive it out. I love traveling with Dad because I remember you just go anywhere and he doesn't need the GPS, he doesn't even need any suggestion, he just explores by himself. So you get to see like places that you can't really find, like on a travel, there's a different experience just trying to explore a place together. Which is the most adventurous trip you all have been on so far? I would say Spiti was a bit adventurous. It is beautiful. It is one of my favorite places. Long story short, I planned the trip with my friends and I got dengue. So I couldn't go, but my friends went with it. But I virtually But you should go there. You should I go recommend there. it. Once you'll go there, you'll understand why is it called so beautiful. What is the highlight of that trip for you all? It's a nature. You feel you're really near God. You're in a place where it's difficult to describe. I say you feel like you're on a giant shoulder of a giant. You're just a small speck and you don't know loneliness till you're there. You think you know loneliness, but when you're there and you just hear nothing but the wind. Yeah, but there's a sense of calm also. Yeah, you enjoy that loneliness. Yeah, that's what I'm saying. Like when people enjoy say it. that, there's a sense of peace and calm, and the monasteries there, the food there, and just the experience of being in the car and the bumpy roads. Then when you get a smooth road, you're grateful for that. And there's so many dhabas on the way. Oh yeah, the dhabas And are all just the too dhabas good. are known as Chacha Chachi ka dhaba. Yeah. Yeah, it is so famous. It is very Wherever you popular. go, it's known as Chacha Chachi's dhaba. And you just meet dogs out of nowhere. You get these fluffy dogs that you're thinking, where the hell have you come from? And they'll follow you while trekking. In fact, they'll guide you the right way also. Yeah. So it's just an amazing experience being there. Okay. Okay, now that work is resumed, now I want to know about what are the upcoming projects that you all are working on. Let's start with you. I got to know through Dad and my casting person also, Mukesh Chabra, on the project that Surat sir's son Avnish wants to direct this movie. He wrote it himself for 4 years also. So once I heard the script, I immediately thought it was very unique. You can educate me, maybe I'm wrong. I'd never heard of a project that circled around closure, this particular theme. And the character I just could really relate to his insecurities, his rejection, his challenges.
And I think like a lot of people can. Avnish saw the character in me. He still put me through 3 rounds of audition. Thank you, Avnish. When I got the call after 2 weeks later of trying to tell myself, you know what, it's a good experience, fine. If you don't get it, you don't get it. I got the call and I told Dad I was excited and I started work on it immediately. Okay, but does romance as a genre fit well with you? I guess because they all think I look like a chocolate boy, so I guess it fits the thing well. But I don't see myself like that. I just want to do everything and anything, from romantic guy to even a serial killer. Why not? Ooh, okay, interesting. For all those who feel that he actually looks like a chocolate boy, comment in the comment section and let us know. And whether the two of you all would like to do a film together, is that in the bank sometime soon? Yeah, why not? Why not? It all depends whoever wants to, obviously. We both would love to do it. That's good to know. I want you to complete his dialogue, and whatever you can't, you have to complete them. Okay. I already. I want to say I'm sorry sorry to all my dad's fans. Okay. Please don't hate me. Let's start with the easier one. Okay. ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना, You said I don't want to butcher it. तो आदमी उठता नहीं, उठ उठ जाता है. woo! Yeah, it's that voice. It's more that voice than anything else. Okay, next. तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती गई. My lord. And लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, मिली है तो सिर्फ तारीख. अगर आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं. लेकिन हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है. जिंदाबाद रहेगा. ये तो हमें भी याद है. woo! You are the moral support here, right? He doesn't want to take away from Papa. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ गांधी भी है, पटेल भी है. ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ गांधी भी है, पटेल भी है, भी होता. ते थोड़ा सा भगत सिंह. Oh yes, that is it. Woo! That was a nice round. I was actually expecting him to answer, but then we have the OG sitting here with us. How can we have someone else answer those dialogues? रेंज रोवर ही है मेरे हाल में. डिफेंडर लिखा था पर अच्छा, मुझे लगा शायद रेंज रोवर लिखा हुआ है. मुझे आर नजर आया था एंड में. काफी. To be here, I'm really excited to try this लेकिन अच्छी location which लग you रही have है. suggested. I'm excited for you all to try it. But what do you all like? Because Punjabi families love their food. आपको क्या खाना पसंद है? घर पे क्या बनता है? ये घर का हम शुरू से घर का खाना खाते रहे हैं. बेसिकली एक सब्जी बनती थी, एक दाल एंड दही होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था. एंड वी वर सो हैप्पी विद दैट. Oh, the food is here. क्रीम पफ हमारे बचपन में यही क्रीम पफ मिलता था. When you go to the restaurant, there's a moment of silence when the food comes and all of us are just busy. I don't know, that's what food is all about. So Mumbai is a place where college life is something which you cannot enjoy in any other city. What were your hangout spots back then when you were in college, and what were your hangout spots recently? I think when we were, during our time, we used to basically mostly be into the canteens. That time Bombay was not so crowded. So गाड़ी होती थी, and that time Fiats and Ambassador were the cars. हम जिसके पास गाड़ी होती थी सब उसमें बैठते थे, निकल जाते थे, कहीं भी चले जाते थे. And then restaurant would be somewhere in Linking Road. There used to be quite a few restaurants there. And then town side we would go. That time going to a proper restaurant would be going to a 5-star hotel. Oh, सही बात है. अब तो बहुत So यहाँ Oberoi's and Taj यहाँ जाया करते थे. So that's how it was that time. But it was so beautiful. I mean, मैं बातें कर रहा हूँ, I can go back to that time. can you taste the food? All this was not there. This area was not there. I mean, these things were not here. I mean, this was just trees and trees and trees all around over here. And now things have changed so much. Har gully mein there's a cafe, and all those cafes are equally good. So what are your really like hangout spots or favorite spots in the city? But this growing up, I used to go after school, after basketball practice. I mean, quality. We used to go to Tibbs for Frankie's. And obviously, nature's like natural. We used to go have ice cream over there. My favorite was Malai ice cream. So I remember after school, we used to go there. Mithi Bai we would go to and have all the dosas also after school. Yes. So I mean, it's such a diverse city and there's so many options. And
every time you go, Bandra is different, Lokhandwala is different, Juhu is different. It just changes. Every 20 minutes you sit in the car, the cuisine will also change. So I mean, this is a vibe, like loads of food options. You can just stuff your face. I have a game for the two of you all now. And I want to know who's more likely to do these things. Who is more likely to win an arm wrestling contest? It's a very hard answer. I'm sure the audience also must be like finding it very hard. Okay. It's obvious. Who's more likely to be the adventurous one while traveling? I'm the most adventurous type of. Really? Traveling with dad. Yeah. I love to. Something spontaneous will happen. Who's more likely to spend more time in the gym? I enjoy a lot of gymming and working. I mean, playing games and all. And it's yeah. You and I spend time in it. Who's more likely to watch the most Bollywood films in a month? Who's more likely to be the early riser? I wake up at 8 and that's also late. 8 o'clock, 8 a.m. is late in my house. Who is more likely to try their hand at cooking a new recipe? Not even hand and trying only. Cooking a new recipe is a part of thing. The best thing I can do is make butter toast and pour cornflakes and milk together. Who's more likely to win a pani puri competition? I think we have to find that one out. Who's more likely to crack a joke in a serious situation? I think. No tension in the house. One person had to shatter it. That was me. Who's more likely to forget their lines while acting? I'm the one who forgets. I forget them very often. Who's more likely to cry while watching a sad movie? I react to any kind of. Both of us, you and I cry. Sad. If it is sad, Yeah. I get caught up in it and I get caught I into don't do it that openly. I'll quickly do this and I'll be like, I'm not crying, I'm fine. Who is more likely to win in a karaoke singing competition? We've never tried it, have we? I think the wall. Oh yes, that is it. But that is it for today's episode of Tere Gully mein. Thank you so much. मुझे ना इसका नाम आता है लेकिन मुझे लग रहा है मैं गलत ले लूँ इसलिए मैं बोल नहीं रही। भाई आज की वीडियो में जो ना हमें बाप और बेटे की केमिस्ट्री जो है वो देखने को मिली। मुझे देख के अच्छा लगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक दूसरे के साथ अटैच लग रहे थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी क्योंकि फादर मैं देखती हूँ कि बहुत सारे हम जो मिडिल क्लास लोग हैं उनमें क्या होता है कि ना आपको हमेशा से मना किया जाता है, ये ना करो वो ना करो, एक तरह से ना बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री सेट कर दी जाती है। कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने की ना एक आपको इजाजत नहीं होती। सो मुझे लगता है वो एक्सपेरिमेंट करने से बहुत कुछ हो जाता है ना। अरे मुझे लगता है कि ना वाकई में आपको थोड़ा सा ना बच्चे को पुश करना चाहिए कि अगर वो कोई गलती करता भी है तो कोई बात नहीं, हम हैं संभाल लेंगे। लेकिन जो आप गलती से सीखते हो ना वो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह के नहीं सीखते जहां पर आप वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट एग्जैक्टली क्योंकि वो जब शील्ड एक टाइम पे खत्म होती है ना फिर आपको बड़ी मुश्किल होती है सरवाइव करना। सो मुझे लगता है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़े टफ टाइम जो है वो इस तरह की सिचुएशंस देनी चाहिए पेरेंट्स को, जो कि यूजुअली मैं देखती हूँ कि नहीं हो सकता कि मैं कुछ गलत अंडरस्टैंड करी हूँ, बट ये मेरा सोचना है कि इस तरह का एक होना चाहिए। हाँ, ये हकीकत है कि हमारे यहाँ पर जो है ना मोस्टली ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि भाई जो जब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव कर दिया जाता है ना, जब वो शील्ड खत्म होती है तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मसले मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। फिर मौसम एक मिनट सॉरी इंटरप्ट, फिर एक इमोशनल डायलॉग भी बोला जाता है, आप जदोसी नहीं रहोगे ना फिर पता चलेगा तानू। सही बात है। अच्छा वैसे उनकी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत थी। मैंने उसे रेंज रोवर कह दिया लेकिन वो डिफेंडर उसके ऊपर लिखा हुआ था। मे भी हो सकता है उसी कंपनी की वो गाड़ी हो क्योंकि शेप जो है रेंज रोवर से फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हुई लग रही थी, लेकिन बैक से अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंट थी। हाँ, लेकिन जहाँ पे वो पहले गए हैं प्रीतम दा ढाबा, ठीक है ना, वैसे जगह में खूबसूरत लगी, वाइब्स बहुत अच्छी थी इस जगह ढाबा। बिल्कुल मुझे भी ढाबा जो है वो अच्छा लगा क्योंकि ढाबे के स्टाइल में थोड़ा मॉडर्न स्ट्रक्चर आपको नजर आता, काफी कंफर्टेबल भी था। लेकिन मुझे लग रहा था कि ना हमें ज्यादा देखने को मिलेगा स्ट्रीट फूड, जैसे हम लोगों ने यूयो हनी सिंह का रिमेंबर देखा था, मुझे लगा शायद हमें उस स्टाइल का कुछ देखने को मिलेगा। बट खैर ये थोड़ा फाइन डाइनिंग टाइप का हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन अच्छा है जहाँ पर हम लोग स्ट्रीट फूड देखते हैं वहाँ पर हमें फाइन डाइनिंग भी देखने को मिलती है। बाकी उसके बाद जैसे वो आए थे भाई क्रीम पफ वाली जगह पर, मैंने कहा मौसम की हाँ बेकरी पर आए थे। काफ़ी मतलब भाई कहीं छोटी सी अच्छी सी जगह थी, लाइक आप बड़े कंफर्ट के साथ वहाँ पर बैठकर खा सकते हो बेकरी की आइटम्स जिनको बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो क्या नाम है डेट के लिए अच्छी जगह थी
जाना चाहे, क्योंकि जितनी छोटी सी बनी हुई थी, मुझे लगता है 2-3 ही टेबल वहां पे होंगे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो अच्छी जगह थी। वाह वाह, मतलब क्या यार कपल लोग जो होते हैं ना, ऐसी जगह है जो है ना वो ढूंढते हैं। लेकिन हाँ, मैंने जो है वो भाई क्रीम पफ कह ले, बटर पफ कह ले, बचपन में इस तरह के मिलते थे। कोकोनट एक लड्डू होता था, तो पता नहीं क्या कहते थे, अगर याद हो, वो कोकोनट का ही बना होता था, बड़ा पसंद था मुझे वो। अब तो अरसा दराज होगी, वो चीज़ें ना कभी खाई हैं ना कभी दोबारा देखी हैं, तो मुझे वो लगा था। लेकिन अच्छा। इन्होंने बाद में ये क्रिएट करवाया, नहीं ये वो नहीं, क्या है ये तुम्हें बताओ क्या है। एक्चुअली में मुझे भी, मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैं सही बोलूंगी कि नहीं बोलूंगी, लेकिन जब मैंने दोबारा से देखा, चेक किया, तो क्रूजेंट था वो। वैसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलें तो भाई वो तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट नहीं, हमारा पता नहीं क्रूजन सा नाम आ जाता है, लेकिन अमेरिकन में तो क्रूजेंट ही बोलते हैं, तो हम इजी वाला ही चूज़ कर लेते हैं। मुझे जो सनी देओल सर हैं उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि जैसे ही वो मतलब नॉस्टैल्जिक हो रहे थे अपनी बातें बताते, तो यू नो एक ऐसी सोच में डीपली जा रहे थे ना, जैसे ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हमें कोई पुराना टाइम याद आ रहा होता है ना, तो हम एक ही जगह पर हमारी नज़र चली जाती है और हम लोग, हमारा माइंड उसी मतलब सिचुएशन में, वही सीन हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि हम उस टाइम को एंजॉय भी कर रहे हैं, उस टाइम में वापस जा रहे हैं। तो वो उनके चेहरे पे जो मुझे नजर आया ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हकीकत है कि जब आप अपने बड़ों के पास ही बैठे होते हैं ना, यानी कि दो बड़े आपस में बैठ के अपने पुराने टाइम की बातें कर रहे हो, तो आपको काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी अच्छी जो है ना वाइब्स आपको आती हैं। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है यार वो टाइम कितना अच्छा होगा। जैसे मैं बड़ी देर पहले पता नहीं किसका इंटरव्यू इधर सुन रहा था पाकिस्तान में ना, तो मॉडल टाउन की बात हो रही थी, तो वो बातें करता हुआ बता रहा था यहाँ से सड़क जाती थी और साइडों पे सारा जंगल ही जंगल, दरख्त ही दरख्त हुआ करते थे। तो मैं उन वाइब्स को ना फील कर पा रहा था कि यार वो किस, यानी कि एक होता है ना इमेजिनेशन में कि कैसी जगह वो होगी, तो लिटरली आप फील करते। जैसे सनी सर जो हैं उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे सारा दरख्त ही दरख्त हुआ करते थे, अब ये कैफे बन गया या और जगहें बन गई। मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है ना कि सीरियसली मुझे लगता है कि जो लोग 2000 अर्ली 2000 में पैदा हुए या 90s में 80s में पैदा हुए, वो ना एक लिहाज से बड़े ब्लेस्ड हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो आज की जनरेशन नहीं देख सकती। वो सिर्फ मतलब हमसे सुन सकती है, मतलब एक्सपीरियंस नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि वाकई में ये ना एक अलग ही, वो जैसे ये कहते हैं ना कि एक सेंचुरी चेंज हुई ना, सब कुछ जो है ना उसके साथ साथ चेंज होता है। देखिए हम वो जनरेशन है जो टेलीफोन से मोबाइल फोन तक आए, और उससे पहले वाली जनरेशन देखो कि उनके पास कार्डलेस की भी फैसिलिटी होती थी। लाइक अगर हम जैसे अभी मोबाइल की बात करें, वॉकी टॉकीज हुआ करते थे। सो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी वही कह रहा हूँ ना कि हम ना एक्चुअली वो जनरेशन है जिन्होंने जो है ना टेलीफोन से मोबाइल फोन तक, फिर उसके बाद रेडियो से टीवी से जो है स्मार्टफोन्स, एलईडीज, ये सारी चीजें जो है वो एक्सपीरियंस की हुई हैं। एनीवे गाइस, ओवरऑल मैं कहूँगी कि आप किसी को भी जब सुनते हो ना, इनके एक्सपीरियंस को सुनते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको सीखने का ज़रूर मिलता है। बाकी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो नई जनरेशन है और अगर हमें देख रही है, और जो पुरानी जनरेशन है, दोनों अपने अपने व्यूज़ जो हैं उसके बारे में ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।